Dear students, now we discuss some important points about the virtual world method. Number one, it is not necessary to dismember the systems in order to establish a relations between the active forces. यानी कि हम सिस्टम को मेंबर बनाते हुए उसको कंसिडर करते हुए रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एक्टिव फोर्सेस as well as relations between active forces can be determined directly without reference to the reactive forces. ठीक है, रिएक्टिव फोर्सेस को भी अगर हम उसका रेफरेंस ना दें, उसको डिस्कस ना करें या उनको हम कंसिडर ना करें, तब भी हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन एक्टिव फोर्सेस. And number 3, this method is particularly useful in determining the position of equilibrium of a system under known loads, यानी कि weights, यानी कि forces. This is in contrast to determining the forces acting on a body whose equilibrium position is known. यानी कि पहले हम forces find out करते थे जहाँ पे हमें equilibrium position पता होती थी, लेकिन इस मेथड से हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें नॉन लोड्स या वेट्स या फोर्सेस गिवन हो. एंड फोर्थ, द मेथड रिक्वायर्स दैट इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस, इंटरनल जो रगड़ की गुफ्ती होती हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं, दे डू नेग्लिजिबल और जीरो और ऑलमोस्ट नथिंग वर्क during any virtual displacement. And last but not least, if internal friction is appreciable, work done by internal friction forces must be included in the analysis. उसका हमें काफ़ी फ़ायदा होगा. So these are the points about the virtual world method. Thank you.